तो अभी शाम को ये वाला जो पूरा एरिया है, सो दिस होल एरिया वुड बी ऑक्यूपाइड बाय ऑल द विजिटर्स, और जो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे इस इवेंट के लिए। आरती होने वाली है यहाँ पर, एक महा आरती होगी। सो ऑल द डेकोरेशन स्टफ इट्स गोइंग ऑन। सो दिस वंस माय फेवरेट सेक्शन। सो it's a beautiful peacock sculpture. So electrician is working as well to set the things up, like the screen and all the lighting and everything. So we have now set up the chairs. अब चेयर लग गई यहाँ पर स्टेज के सामने। सो बाकी सारी चीज़ें, लाइट्स, ये वो हर चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं अभी। और ये देखो थोड़ा सा इसका रंग रूप बदल गया है, जो जगह है जहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये देखो सब अपनी मेलबर्न टीम हमारी, ये देखो AHA की मेलबर्न टीम। देखो वो एक टोली गई थी। सो ये रही यात्रा गीता जी की। ये देखो बड़ी सुंदर झांकी, और ऐसे ही देखो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे स्वामीनारायण के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी झांकियाँ हैं ये। बहुत ही सुंदर झांकियाँ, और सभी ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, सभी ने कंट्रीब्यूट किया है इस इवेंट के सक्सेस के लिए। और ये श्री वेंकट कृष्ण भगवान के अलग अलग रूप, जिनका बहुत ही अच्छे से जो एक रूप दिया गया है, सब ने अलग अलग अपने हिसाब से प्रभु को रूप दिया है। और ये गीता सद्भावना यात्रा, ये सभी गाड़ियाँ, ऑल्दो ये काफ़ी लंबी यात्रा होने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स और परमिशंस, तो परमिशन जो मिली उसके हिसाब से इसको किया जा रहा है। अदरवाइज थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस यात्रा। सभी शांत। कुछ भाई, ये जो बीच में है ये गीला नहीं होगा, फुटपाथ, यहाँ आकर बैठ लें। ये जो खड़े हैं अंदर है, तो पीछे वाले देख भी नहीं पा रहे वास्ते, यहाँ आकर। तो अब गंगा आरती थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाएगी। वो सामने गंगा आरती होगी पीछे, मतलब इसके दूसरे किनारे पर उधर। फ़िलहाल हमें टास्क दिया गया है, ये हाई विज़न जो बोलेंगे, हाई विज़ वेस्ट पहन के लोग हैं, जो भी हैं श्रद्धालु हैं, जो डिवोटीज़ हैं, उनको इधर से जाने से रोकना है हमें, उधर नहीं जाने देना दूसरी साइड पर। जब अभी नहीं, जब स्टार्ट होने वाली होगी आरती तो हमको इसी साइड पर रोकना है। स्वामी जी हैं वो यहीं से जाएंगे, तो अभी हमें बस जस्ट वेट करना है कि लोग ना जाएं उधर।
अब ये देखो स्वामी जी आ गए हैं, इधर से जाएंगे गीता यात्रा के लिए फ्रॉम इंडिया। अब ये देखो अब जाएंगे। सो आरती अब स्टार्ट होने वाली है इस साइड। I'll show you। दिखाऊंगा मेरे को, देखो अभी जब नेक्स्ट टाइम भाई इसको पीछे करो, पीछे आओ। तो आरती अब संपूर्ण हो गई है इधर से, और ये सभी लोग स्वामी जी इधर से आ रहे हैं। ये ब्रिज है, सेतु, तो इस सेतु को पार करके आ रहे हैं सभी लोग, और जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रहेगा। मेन चीज़ ये थी कि जो टाइमिंग है आरती का वो फिक्स है, उसी टाइम पर ही करना था, दैट्स वाई। सो इन बिटवीन एकदम से ये किया, और अब आगे जा कर के बाकी सारा जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रहेगा। फायरवर्क्स होंगे बहुत अच्छे, वो उसको भी आपको दिखाऊंगा। I hope all of you enjoyed this mesmerizing performance, and I hope all of you enjoyed the Maha Aarti, Gita Mahotsav as well on the other side. Just clap for the Maha Aarti, please. When I was witnessing the Maha Aarti, I thought, I'm in Kurukshetra. I have been to Kurukshetra a number of times, and the scene from that side towards this side was like Kurukshetra, like Varanasi. So thanks to all of you who came here on this beautiful evening for the closing session of International Gita Mahotsav. Cheer for yourself and clap for yourself. Now, may I request, we have amongst us Honorable Minister for Climate Change, Energy and Climate Change, Chris, and he has been instrumental in getting this International Gita Mahotsav represented in the Federal Parliament in Canberra. He made sure that we present the Gita to the Federal Parliament. May I request, I also acknowledge our Honorable MP from Fairfield, Daniel Sariba. Thank you for coming. And our newest MP and Mayor for Parramatta, Donna Davis. Thank you for coming. And thank you for making this happen. Well, thank you, friends. What a great pleasure it is to join you tonight at Gita Mahotsav. Thank you very much. You've brought the Parramatta Riverbank alive. Parramatta Riverbank, of course, very important to our traditional owners and direct people who I pay my respects to today. Well, we are so pleased and honoured that you've chosen Australia for this very important festival. After London and Mauritius and Canada, you've chosen Australia to spread the word of this ancient book. This book which is ancient but timeless. So Swamiji, thank you for everything you've done to organise this. Thank you to all the people who put so much effort in. For Ms. Donna Davis. Thank you. Thank you, Siwa, and thank you so much for the opportunity to be here tonight. What a wonderful crowd, and isn't it wonderful that the weather held up for us? After last night, who would have thought that tonight would have been such a beautiful evening? I too would like to acknowledge the Borromagil people of the Darug Nation and pay respects to their elders past, present and emerging. And I would like to welcome you all here in my role as the Lord Mayor of this city to the city of Parramatta. And I'm so privileged to now be the state member for Parramatta, which is an even greater achievement for all of us, because we can work together to do so much to continue to bring people together. One of the wonderful things about Parramatta, about Western Sydney, is the incredible cultural diversity that we share. It really is a wonderful mosaic, and here in Parramatta we are so fortunate to be able to boast such
an incredibly strong South Asian population, a very strong Hindu population with it's the third most significant religion that is practiced here in our city. And we know how important it is for all of you to be able to continue to come together to celebrate these time-old traditions, these wonderful cultural traditions, so that all of the younger generations can continue to learn all of those wonderful cultural traditions that you've been able to share in the lands that you have travelled here from. Good evening, everyone. My name is David and I'm the new stake member for Fairfield. I just wanted to thank you all for letting me be here tonight to share this experience with you. When I reflect and look at Parramatta, Fairfield, Parramatta, Liverpool, Western Sydney, I can't help but notice that we live in one of the most multicultural and multi-faith communities, not only in Australia, but the rest of the world. It's that diversity that allows us to learn about each other's cultures, to immerse ourselves within them, to broaden our understanding of the world. And so when I learnt about this event here tonight and the concept of karma, I can't help but notice that my life is the summation of the generosity of others. When I grew up, I had sporting coaches volunteer their time to enable my friends and I to play sport. I had Please put your hands. Put your hands together for this movement. Thank you. Thank you, Dajendra ji. Thank you, Maharaj ji. इन दोनों. some flashlights in the air for your phones, that would be nice. Ugrasena had a son, Kamsa,
who was the crown prince of Mathura. He was a hard-hearted, merciless, and cruel man. Beware, Kans. Know this. The one whom you are saying goodbye to, that very Devaki's 8th son, will kill you.